आज का डिस्कशन हमारा है, इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट देन हाउ टू सक्सीड इन बैंक एग्जाम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज टॉपर्स आउट देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज स्मार्ट स्टूडेंट्स वेदर गर्ल्स और बॉयज, जो कि स्कूल में बहुत अच्छा करते थे, कॉलेज में बहुत अच्छा करते थे एंड नाउ दे आर एस्पायरिंग टू बी बैंकर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी, जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया करते थे, बट नाउ वी फील दैट वी आर स्टक। वी फील कि क्यों ही हमने ये बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, नाउ आई डोंट नो वेयर टू गो। वी फील हेल्पलेस एंड होपलेस। In order to understand this situation, in order to get out of this situation by understanding it well, we need to figure out the root cause of these failures. If you're an average student, why are you not able to succeed till now? That is what we need to understand. And the root cause lies in learnings from school and college education. जैसे कि एक पेड़ है, एक ट्री है, उसका आपको रूट्स नहीं दिखती हैं, बट ऑल द न्यूट्रिशन, ऑल द water, all kinds of healthy things are provided to that tree from or by those roots only. अगर वो रूट सड़ जाती हैं, नो मैटर हाउ गुड द लीव्स आर, हाउ गुड द सन इज, हाउ मच इट्स रेनिंग, इट डजेंट मैटर हाउ गुड द सॉइल इज, द प्लांट or the tree is going to die. Similarly, if you actually want to succeed in bank exams or any other competitive exam, and you feel that you're an average student so you will not be able to do it, before making that decision, it's important to understand the root cause of your failures or the roots where you lie as a person. और वो रूट्स मिलती हैं आपको अपनी स्टूडेंट और कॉलेज एजुकेशन में। अब स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हम सबकॉन्शियसली किया करते थे, विच वी फेल टू अडॉप्ट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और जो लोग इन लर्निंग्स को सबकॉन्शियसली बैंक एग्जाम्स की तैयारी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देर एबल टू फाइंड सक्सेस वेरी इजीली। व्हाट आर नंबर वन, वी ऑलवेज यूज टू स्टडी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता था, वो स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़ के चले जाओ, जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया है वो पढ़ के चले जाओ, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके चले जाओ, यू नो दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इनफ। बहुत अच्छा भी नहीं करोगे तो पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू हैड अ स्ट्रक्चर इन माइंड बिकॉज वेन यू आर इन स्कूल और कॉलेज योर टीचर क्रिएटेड दैट स्ट्रक्चर फॉर यू। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको वो स्ट्रक्चर खुद क्रिएट करना है, एंड दैट इज वेयर वी फाइंड डिफिकल्टीज। दैट इज वेयर वी forget about being structured about our studies, because अब हमें वो खुद करना है, अब कोई हमें करके नहीं दे रहा है। And that is where people like me who are mentors come in and try and structure that preparation for you, क्योंकि हम जितना स्ट्रक्चर करेंगे हम उतना ही आपको स्कूल और कॉलेज एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। सिमिलर फॉर्मेट में रहेगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्लियर दीज एग्जाम्स। So this is number one root cause that we forget, which results in our failure in bank exams, and it has nothing to do with you being average or being very good at studies. Number two, studying one subject at a time. Now this is a problem that we never faced when we were in school or college. हमारे सामने एक एग्जाम होता था, हम उसकी तैयारी करते थे, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम आता था, फिर उसकी तैयारी करते थे। और एक महीने पहले एक एक करके वी यूज टू पिक अप ऑल द सब्जेक्ट्स वन बाय वन, आराम से उनको पढ़ते थे और फिर एग्जाम देने जाते थे रिवीजन करके। एक एक दो दो दिन का गैप मिलता था, उसमें रिवाइज करते थे और आराम से एग्जाम लिखने जाते थे। सो वी वर यूज टू स्टार्टिंग वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर दूसरा उठाया। वी नेवर फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एंशियस अबाउट द अदर सब्जेक्ट। यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स तो आता ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी तो बिल्कुल नहीं करा, मैथ्स तो उठाया ही नहीं अभी तक, ऐसा नहीं सोचते थे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ठीक है यार, देख लेंगे उसको भी, पास तो हो ही जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले फिर सोचेंगे मैथ्स के बारे में। सो वी हैड दैट lightness within us, and that gave us the confidence to study one subject at a time। एक पढ़ो उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे। दिस इज समथिंग दैट वी लैक, स्पेशली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आरबीआई या फिर बैंकिंग एग्जाम्स लाइक आईबीपीएस एंड एसबीआई। हमें लगता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी हैं क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम निकालना है, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। So this is one thing that you have to remember, because you've already learnt it in your school and college education. We need not forget about it. Number three, revision before exam. आपको भी याद होगा एग्जाम से पहले एक दो दिन का गैप हुआ करता था, एंड वी यूज टू रिवाइज इन दोज डेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज होते थे वो पढ़ते ही उसी टाइम पे थे, तो जब वो पढ़ रहे थे उस टाइम पे तो दे वर स्टार्टिंग जस्ट दैट वन सब्जेक्ट, या फिर अगर रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम पे ऑलरेडी पढ़ लिया है एक आध बार, तो बस एक ही सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ रिवाइजिंग बिफोर द एग्जाम। कॉलेज में बाहर खड़े हुए एग्जाम हॉल के
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बुक खोल के कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, यार ये आ गया तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। कुछ ही स्टूडेंट्स होते थे जो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होते थे, जिनकी बुक्स वॉशरूम में रखी रहती थी कि जो भी आएगा हम लोग वॉशरूम जाके चेप के कर देंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ अस यूज टू हैव सम काइंड ऑफ रिविजन बिफोर द एग्जाम। चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही खराब हो, कुछ ना कुछ तो रिविजन हुआ करता था। This is something that we forget when we start writing competitive exams like SBI and IBPS। हम लोग रिवीजन को साइड में रख देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं करना है, आपको डेली रिवाइज करना है। दैट इज द चेंज दैट वी नीड टू मेक। आपको वीकली रिवाइज करना है। यू टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग बिफोर द एग्जाम, इवन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड द एग्जाम इज लिटिल फार अवे, तब भी आपको रिविजन तो स्टार्ट करना ही करना है। This is number three, root cause of our failures because we don't do these things that we've already learned in school and college. Number four, don't take load of the result, study and forget। अब ये सबके साथ होता था, पढ़ लिया और भूल गए, उसके बाद फिर एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। वी डिड नॉट कंसिडर आवरसेल्व्स टू मच अटैच टू द एग्जामिनेशन। यस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो 11th 12th में होते हैं, जेई हो गया या फिर सीयूईटी हो गया, ऐसे एग्जाम्स, या फिर क्लैट का एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम से पहले यू आर अ लिटिल एंशियस एंड यू वांट टू क्लियर देम वेल, बट एट द सेम टाइम तब उतनी ज़्यादा पास्ट में और फ्यूचर में रहने की एबिलिटी नहीं होती थी। सो यू वर जस्ट कंसर्न अबाउट स्टडिंग फॉर द एग्जाम एंड राइटिंग द एग्जाम, और भूल जाते हैं उसके बाद, देख लेंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। सो वी हैड दैट एबिलिटी ऑफ लिविंग इन द मोमेंट, बट वी फॉरगेट दैट, स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग एंड एसबीआई। हम लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट का लोड लेने लगते हैं इवन बिफोर द एग्जामिनेशन हैपन्स, और उस एंजाइटी में हम लोग पढ़ना ही छोड़ देते हैं। Half the day we are concerned about what our result is going to be and actually not on studying। तो आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है। यू टू गो बैक एंड लुक फॉर दोज डेज जहाँ पे यू वर ओनली कंसर्न अबाउट स्टडिंग एंड यू ऑलवेज ऑलवेज फॉरगॉट अबाउट इट आफ्टर द एग्जामिनेशन। Learning number five, or route number five, that still lies with you. It doesn't matter much if you're first or last. If you pass, it's good. Majority of us, especially average students like you and me, used to have this tendency कि यार पास हो जाएंगे, बहुत है, बहुत ज़्यादा टॉप अप करने का कोई शौक तो मुझे है नहीं, फेल नहीं होना है, बस उतना इंश्योर करना है। सो दैट लाइटनेस ऑल्सो मैटर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव द सेम एटीट्यूड कि यहाँ पे एग्जाम नहीं भी हुआ तो ठीक है, बिकॉज यू नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स इन स्पेंडिंग प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ इन प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स। आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू बी लाइट ऑन यू, डू नॉट हैव टू बी सो हार्श ऑन यू। और आपको बताना है अपने आप को कि ठीक है, नहीं हुआ भी तो ठीक है, रीज़न उसका पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। if even if you are doing well, it's fine enough, not everyone will succeed, so it's fine even if you're not able to succeed। जब तक आप उतना लाइटनेस अपने अंदर नहीं रखोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी ऑल्सो। अब ये 5 रूट्स जो हैं हम इनको भूल जाते हैं। दैट इज दैट दीज आर द मेजर रीजंस दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड सक्सेस इन बैंक एग्जाम्स। तो हम ये सारी लर्निंग्स भूल जाते हैं, and when we forget these learnings, we fail to apply these in our present environment, in our present preparation। And when we forget to apply these in our present preparation, तो automatically हमें बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ती हैं, ज़ीरो से करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ वेयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अब आपको नई चीज़ सीखनी है, वो अप्लाई करनी है, उनसे एग्जाम क्लियर करना है, ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थक जाते हैं। सेकेंड मिस्टेक दैट वी मेक इज वी अटैच आवर लाइफ विद बैंक एग्जाम। हम लोग सोचते हैं कि ये बस एक एग्ज़ाम नहीं है, दिस इज़, हम ये सोचते हैं कि ये बस एक एग्ज़ाम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इफ़ वी डोंट क्लियर दिस एग्ज़ाम देन व्हाट विल वी डू? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत सीरियसली अपनी पूरी लाइफ़ को एक एग्ज़ाम के साथ अटैच कर लेते हैं। बट आवर लाइफ़ इज़ नॉट जस्ट अबाउट एन एग्ज़ामिनेशन। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अस बिकॉज़ इट डिफाइन्स आवर सक्सेस और फेलियर, and it's good to uh, do your best and to work hard, but it's not good to attach your entire life and revolve your entire life around these exams। दिन में 6 7 घंटे 8 घंटे पढ़िए, उसके बाद आराम करिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अटैचिंग योर एंटायर लाइफ विद बैंक एग्जाम्स, यू हैव अनदर लाइफ एज वेल, एंड वी फॉरगेट दैट इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन, उससे ज़्यादा ही कुछ नहीं है। Number four, if you fail, start again or move on। We forget we do not succeed because we do not keep this option alive। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि फेल हो गए तो I have an option to either start again and prepare
again for this exam or to move on. हम लोग सोचते हैं कि बस यही एक ऑप्शन है कि आई हैव टू जस्ट स्टार्ट अगेन बिकॉज माई एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस एग्जाम, और अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या ही करूँगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, एंड वी कीप दिस ऑप्शन असाइड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कीपिंग दिस ऑप्शन active with you. So if you fail, if you're not able to succeed, first you have to figure out why are you not able to succeed. And if you're not able to find that, if you're not able to move on and do it better again, then it's better to move forward with your life. जब तक वो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप इस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह नहीं लोगे. यू विल कीप दिस एग्जाम एज योर लाइफ, as a matter of life and death. And that is where we make a mistake, because the moment we start taking this exam or any of these exams as a matter of life and death, we stop enjoying the process, number one, and we stop learning from our mistakes and from the examination. Okay? हम लोग का ईगो इतना बढ़ जाता है कि एग्जाम क्लियर करना है कि हम वो चीज़ें भूल जाते हैं जिनके थ्रू ही एग्जाम एक्चुअली में क्लियर होने वाला है. ओके, एंड द लास्ट इज वी आर नॉट एबल टू सक्सीड बिकॉज वी पे हीड to these cliches जो आपके अराउंड इधर उधर घूमते रहते हैं. नंबर वन, students, lot of students call me and tell me, sir, I want to settle down. Now what is the meaning of settling down? If getting a job means settling down, then you can easily find a job elsewhere in the private sector. Why so much excitement and obsession with getting a government job? Is it because you don't want to work after getting a government job, or is it because you want security to that extent that you do not have belief over yourself? So this entire idea of settling down, it somewhere pulls you back. It does not allow you to give your best. And that is why you're not able to give your best. That is why you're not able to clear the exam. Second cliche, I'm already 25, it's too late. Average lifespan is 65 to 70, 65 le lete hain. You've lived 25 years. You still have 40 years ahead of your life, and you're saying it's too late. It's not too late. थोड़े साल पहले ही पीपल्स करियर यूज टू किक स्टार्ट एट 30. उससे पहले तो वो टाइम पास ही करते थे. अभी क्या हो गया, आर करियर्स हिट आर बेस्ट एट 30 एंड देन वी आर लाइक व्हाट डू वी डू नाउ, अब तो सब कुछ कर लिया है. सो प्लीज डोंट बी कंसर्न अबाउट योर एज. हर एक का सक्सेस का टाइम अलग होता है. कुछ लोग 20 में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग 25 में होते हैं, कुछ 30 में होते हैं, कुछ 40 में भी होते हैं. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद पीपल हु ऑलरेडी अटेन्ड सक्सेस एट 20. आपका दिन भी आएगा, सबका दिन आता है. आई एम नॉट सक्सेसफुल. Telling yourself that you're not successful just because you did not clear an examination, please don't undermine your own abilities. Your life as a person is not defined by success or failure in one examination. You have failed in hundreds of examinations before. You have succeeded and done well in thousands of examinations before today. So you cannot say and you should not think that you are not successful just because you did not clear this one examination. It doesn't define you, it doesn't define your life, it doesn't define your future. Okay? And last is, what will people think? I'm not saying what will people say, I'm saying what will people think. Till the time you stay concerned about what others are thinking about you, not saying to you, but even thinking about you will not be able to sleep well at night, and you will not be able to give out your best every day. So instead of thinking about what people think about you, be concerned about what you think about yourself. That is more important. That is what matters, because people around you will keep changing, but you will stay with yourself for your entire life. So be more concerned about what you think about yourself and try to work upon that rather than thinking about what others are thinking about you. Okay? The moment you make these changes, the moment you adopt all these routes that you've already developed in your school and college, and the moment you try and eliminate these negatives from your preparation right now, it will be very easy for you, even as an average student, to clear these examinations. Because यहाँ पे मैंने पढ़ाई की कोई बात की ही नहीं है. I know that you guys can study. Even if you're an average student, you can put in the hard work, you can put in those hours and you can clear the exam. But these are the things that majority of us are unable to learn, जिसकी वजह से हमारा success नहीं आता है हमारे पास. The moment you find these basic things in your life, automatically you will see that the way you look at these exams and your preparation will change. And with that, you will also find it easy to look for and also to get success in your life. So this was all for today's session.
I hope you liked it. If you have anything to say, do not forget to mention it in the comment section below. It'll help me understand what you think as an aspirant, and it'll also help me to come out with solutions to the problems that we aspirants are facing nowadays. In this age of social media, so much clutter around, but very few people talking about your problems. What exactly do you want to work upon, or what exactly are you concerned about? I'll see you very soon. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.